Okay, so in the previous video, we have seen that the how we can define the user-defined function and how we can use the list of argument in the functions. What are different types of functions? How we can pass the value to the function? How we can return the how we can call the function and how we can return the value and display the result. So function is nothing but it is a block or it is a self-contained block which is used to perform a specific task. So already in previous session we have seen that the function declaration, it is also called as function definition, and then we also have seen the function calling method. Why function calling is required? Because whatever the code you have written in your function, it has no any effect unless and until you will call the function. So function calling is also important. First you have to declare the function and then you have to call the function. Now in this session we are going to see the arbitrary argument in the Python. What is mean by arbitrary argument and what is its use, what is the syntax to use this argument, and how we can write a simple program by using the arbitrary argument. So what is the use of this argument? So these type of arguments are used when we are not sure about how many arguments or how many parameters we are going to use in the function declaration and how many values we are going to pass into our function. So list of argument is not defined. You are not sure about the fixed size of the list of argument. In that case, you can use the arbitrary argument. This argument is starting with the star symbol. So in the bracket, in the function parenthesis, you have to use the star and then followed by the name of the argument. Then this name may be any variable you can use for the arbitrary argument, and now compiler will understand that user is not sure about the fixed size of the parameters that he is going to pass in the function call. That's why he is using this argument, and now compiler will support you or help you to pass as many values or as many arguments you want to pass into your function. So this is the use of arbitrary argument. Understood? Okay. Now what is the syntax? General syntax, whatever you have seen to declare the user defined function. Functions are defined with the help of def keyword. Then it is followed by your own function name. Function name is given by you. User can give as per his wish or as per his choice. He can give the name for his function. But while giving the name for your function, you have to follow the variable declaration rules. And functions always come with the parenthesis. So in the parenthesis, you have to just like how we can use the list of argument in the function parenthesis. We have used the list of argument. If your argument is only one, then write the name of that variable or name of that argument. If your list is more than one, then you have separated all these arguments with the help of comma, comma, comma. Okay, but here in the function call, we are going to use a special method that is called the arbitrary argument. And this is defined or this is declared in the function definition, function declaration part in the parenthesis of the user defined function with the help of star. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार को मैंने यूज किया है एंड args नथिंग बट आर्गुमेंट. अर्ग्स मतलब क्या है? आर्गुमेंट्स. So no predefined size for your argument. So compiler will understand now many argument may be passed in the function call. If fixed defined size, for example, a comma b comma c, so how many list of arguments you are passing? You are going to pass in the function call 3 arguments. But यहाँ पे when I will use only the star and args or any name of the variable you can give for your arbitrary argument. So compiler will allow you to pass as many values as you want to perform a specific task. This is the use of arbitrary argument. Understood? Then whatever the operation you want to perform, that you can write into the block of the function.
Okay, general syntax we have to follow to declare our function, and then in the function definition itself we have to use the arbitrary argument with the help of star and name of the argument. Any name you can give. Okay. सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखिए आप एक एग्जांपल मैंने किया है. सो माय यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम इज न्यू फंक्शन. दिस इज द नेम ऑफ माय फंक्शन, एंड यहाँ पे इन द फंक्शन डिक्लेरेशन इन द पैरेंथेसिस ऑफ माय न्यू फंक्शन I am using star and one variable I have used. What is the name of that variable? Subjects. So whenever I will declare my argument with the help of star and any variable name, now compiler will understand that this argument is arbitrary argument, and compiler know that whenever function is called, user can pass as many value as he or she want to execute and perform the operation. Understood? So यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन दी फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन पैरेंथेसिस में मैंने क्या किया है, एक आर्गुमेंट डिक्लेयर किया है, एंड उस आर्गुमेंट को मैंने स्टार यूज किया है. नाउ कंपाइलर विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज द आर्बिट्ररी आर्गुमेंट. ओके, यहाँ पे देन प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या कर रही हूँ, सब्जेक्ट्स को प्रिंट कर रही हूँ. एंड what subjects I am going to print, that subject I will use in the function call. ये क्या है, this is just the statement that I want to print on the screen. So this is the code block for my function, user defined function. Okay, and now यहाँ पे देखिए ये जो function call किया है मैंने, what is the syntax to call the function? Just write the name of the function, and in the parenthesis you can pass the value, or you can just pass the argument. That argument is called a actual argument, and the argument which is declared in the function definition, it is called a formal argument. So two types of arguments are there, formal argument and actual argument. So यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, फंक्शन कॉल में many values I have passed. In the previous example, we have seen that in function declaration only a comma b or a comma b comma c, three different variables we have declared and we have performed the operation. But यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, function declaration में I am going to use only one argument, but for that argument I have used a star. Now compiler will help you to पास एज मेनी वैल्यू एज यू वांट. तो कहां पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये है फंक्शन कॉल. सो दिस इज द यूज ऑफ, कितने वैल्यू मैंने पास किया है, डीबीएमएस सब्जेक्ट दिस इज वन वैल्यू, सी प्लस प्लस दिस इज अगेन अनदर वैल्यू, एंड पीएचपी अनदर वैल्यू, जावा अनदर वैल्यू. सो कंपाइलर विल हेल्प यू टू रिटर्न the value in the form of tuple. टपल है ना, देखिए टपल के वैल्यू कैसे स्टोर होते हैं, विद इन सिंपल पेयर ऑफ पैरेंथेसिस ना. हाउ वी कैन एनक्लोज द टपल वैल्यू, tuple value we can enclose within the pair of parentheses. Either it may be numeric value or it may be string value. So arbitrary argument help us to return the set of tuple, set of different value in the form of tuple. So this is the use of, यहाँ पे और एक वैल्यू आप पास कर, many value as you want you can pass. So यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया, and you can execute. oh invalid syntax कहाँ पे आ गया, इधर कॉमा नहीं दे दिया, हाँ इधर क्लोज नहीं किया ना. डबल सिंगल इट इज अलाउड. Strings are enclosed within single quotation or double quotation. Both are allowed. Okay. So this is the simple example or demonstration by using the arbitrary argument in the Python. Now one another example you can see here. So user defined function is names. This is the name of my user defined function, and in the function parenthesis I have used the arbitrary argument. Why it is arbitrary? Because star is used with the argument. That's why it is arbitrary. And then I have displayed the name, and in the name variable itself it will help us to store many values. यहाँ पे देखिए मैं नेम वेरिएबल में मैं डिस्प्ले क्या कर रही हूँ,
नेम वन, जो आर्बिटररी आर्गुमेंट एज अ आर्बिटररी आर्गुमेंट जो मैंने आर्गुमेंट यूज किया है उसी वेरिएबल को मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, लेकिन इसी वेरिएबल में मेनी वैल्यूज आर गोइंग टू स्टोर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हो गया। सो मेनी वैल्यू arbitrary argument help you to return or to pass many value in the form of tuple। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज वन अनदर एग्जाम्पल। आई एम टेकिंग मल्टीपल वैल्यूज, मेनी वैल्यूज, एंड देन आई एम परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ दिस वैल्यूज। तो प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने क्या दिया देखा था, एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स। हम दो इंटीजर्स को ले रहे थे, उसकी सम कर रहे थे, देन फंक्शन कॉल कर रहे थे, फंक्शन कॉल में हम कुछ वैल्यू पास कर रहे थे एंड उसी वैल्यूज के ऊपर एडिशन परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया एडिशन, नेम ऑफ माय फंक्शन इज एडिशन, and then I have used the arbitrary argument। Why it is arbitrary? Because star is used with the variable name, and now compiler will allow you to store as many value as you want into the variable name that you have declared in the function definition। What is the name of my variable? Number। So number variable में बहुत सारे वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो, and then that values can be used to perform the operation। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, टोटल सम इज इक्वल टू सम। सम अभी यहाँ पे सम फंक्शन को मैंने यूज किया है, सम इज द बिल्ट इन फंक्शन। तो कौन से वैल्यूज पे मैं सम करना चाहती हूँ, ये मेरी सम कहाँ पे स्टोर हो रही है, सम स्टोर हो रही है टोटल सम वेरिएबल में। कौन से वैल्यूज की सम मैं कर रही हूं, जो नंबर वेरिएबल में जो कुछ भी वैल्यू स्टोर हो जाएंगे उस वैल्यूज के ऊपर मैं सम कर रही हूं, लेकिन आई एम नॉट परफॉर्मिंग द सम ऑफ माय वैल्यूज बाय मैन्युअल मेथड। मैन्युअली मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूँ, सम परफॉर्म करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है इन पाइथन, दैट फंक्शन is sum function, and this function I have applied। So whatever the values will be stored in this number variable, that will be used to perform the sum or the total of all that values। And then I have displayed the sum। कहाँ पे हमने स्टोर किया है सम, तो इस वेरिएबल में हमने सम स्टोर किया है, उसको हमने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे। एंड देन दिस कोड हैज नो इफेक्ट, this code has no effect unless and until you will call your function। So this is the function calling, and in the function call I have passed many values, so as many as you want you can store the values into your arbitrary variable। So you can see the sum of, दिख रहा है, understood, arbitrary variable or arbitrary argument। Okay, so this is the demonstration, simple demonstration of the arbitrary argument in the Python। Thank you।